गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, भूपेंद्र शर्मा आपके सामने एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो साउंड से रिलेटेड है। साउंड इट्स एन एनर्जी एंड हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड what is the physics behind its production, how the sound is produced, साउंड कैसे पैदा होता है और साउंड कैसे हमें सुनाई देता है। ये सब चीज़ें हम लोग समझने के लिए बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल एक करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू द न्यू दोज हु आर क्वाइट न्यू टू दिस concepts of sound, especially those who are in high school and in the intermediate higher secondary level. So let's go for this practical. Again I have this extra pipe and one seizure in my hand. So what I am going to do, I have already told you that for the production of sound vibration is required. बगैर वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ये जो एक्स्ट्रा पाइप है इसमें बीच में होल है, ये होल जो है जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई ब्लो इट इन, कितनों भी तेज से हम फूकें आवाज़ नहीं पैदा होगी। तो हम करेंगे क्या, इसको वाइब्रेट करने के लिए दो फॉर्क जैसा बनाएंगे, इसमें दांत से ही इसको हम लोग दबाएंगे ताकि वाइब्रेटिंग फॉर्क बन जाए। Quite interesting. You can understand when there is vibration only then the sound was produced. Otherwise when there was no bisection there was no sound. तो ये वाइब्रेट हो रहा है इसलिए साउंड पैदा हो रहा है। अभी और थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा और उससे बेहतर है कि हम इसको साइड से वी शेप में काट दें। Only then the sound is produced. So this was something which was required for the quite loud. Now one more thing related with the sound that we can do here is you can see the length of the extra is this much. Now we are going to cut it by inch. Then how the quality of sound is going to change and what is the loudness and pitch and so many things that we will understand by cutting it. Sound is quite loud. Now if I cut this by this much length, the quality of sound has got different. Now if I cut again, you can understand what is going on by when we are cutting it by inch. The length of the windpipe is changing and accordingly the quality and pitch of the sound is changing, and you hear the louder sound which pitch is quite high. Now again if I cut it, higher pitch. Again if I cut, so pitch is going gradually higher and higher. Again तो पिच बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग लेंथ कम करते जा रहे हैं तो पिच साउंड का बढ़ता जा रहा है, आवाज़ तेज होती जा रही। So it was quite interesting for us to understand and quite helping to understand the different concepts related with sound. Thank you.